अभी इस सेमेस्टर से दिस टर्म से अलग से क्लासेस लगते हैं बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप के। सर ने बोला कि आपके लिए हो पाया। आई वाज लाइक ओ माय गॉड, ये क्या बोल रहा हूँ कि दीज पीपल विल बिकम द नेक्स्ट साइंटिस्ट, दिस विल बिकम द नेक्स्ट इन्फ्लुएंसर्स, नेक्स्ट एस्ट्रोनॉट। सो टू एम्पावर देम, बोला था ना कि देयर आर टू वेज हैरी, वन इज द राइट, one's the right way and one's the easy way. So we have to choose it for ourselves. So what we did is that we built a website that looks, feels, and functions like an operating system. We have our own app library over there, so you can just go. You don't need to install anything. You just go there, you just click on that application, and you can just get started with that. So hello everyone, today we have a startup founder from a small village of West Bengal जिसका नाम है मदनपुर and इनके startup ने funding लिया from Government of India and Google Cloud of up to $200,000 and इनका startup अभी feature हुआ था in IIT Bombay जिनको World Trade Center Innovation Award भी मिला and their startup is so much in demand that even from IITs and big companies want to acquire it. So let's get to know about the journey of Ronak. So hi Ronak, can you please introduce yourself? Thank you so much, Harnoor. So thanks for having me, actually. So my name is Ronak. I'm the founder and CEO of ProjectX.Cloud. I'm 21 years old, and we have been building Project X and Infinity OS for the past 2 years. So I'm born and brought up in a very, very small village of West Bengal where I've seen the digital divide firsthand. So, seeing that myself and experiencing that when I went to college, I have, so I saw people from around the globe facing the same problem, not only in different cities of India, but also in, different parts of the world. So, I called up one of my very close friends who was a DevOps engineer, and we started off this journey. We knew nothing about entrepreneurship, but we had the vision to build something for the people. And here we are in front of you. Wow. तो सबसे पहले let's get to know about the vision and what problem you were trying to solve. तो आपने क्या problem देखी वेस्ट बंगाल में अपने childhood में जो आप solve करना चाहते थे? हाँ, तो द थिंग इज कि हमारे गांव में एक ही कंप्यूटर था, ठीक है, हमारे घर पे। तो क्या होता था कि आसपास के बच्चे ना हमारे घर पे आया करते थे देखने के लिए कि टू लाइक हाउ डू आई प्ले गेम्स, दिस दैट। सो फॉर्चुनेटली आई वाज अ टेक geek from the childhood only, so I used to play with custom ROMs on the mobile phone, change operating systems, do this networking का ये वो सब। तो people saw, ठीक है, you know so there was a friend of mine who couldn't complete his schooling due to financial challenges. So that guy learned to use computer from me, and he landed an IT job. So this is the difference that computers can make. And after the pandemic, when everything has gone digital, at this point of time, even for basic education and your professional needs, you need a very good computing machine to get your things done in the best possible way. So to bridge that gap, we are building a cloud based operating system that you can access from any device with any hardware, basically. So the applications are running on the cloud, so you can access it from your device and get your things done. So suppose you want to try your hands on Android development, so that Android development requires a very heavy computer. And even for students who want to do freelancing in photo editing, video editing, they need some computational power, and they can't afford that. Correct. So with Infinity OS, they will be able to do that in their entry level laptop, in their TV at home, in their tablet, or even in their smartphone, if they're they can get it done. Oh, मैं relate कर सकता हूँ. I know for Android development you need minimum 8 GB RAM and powerful processor in order for Android apps to build on time. Even with that, काफी times like build takes few minutes, 5-6 minutes, even with this power. So now how the change has been brought? आपका startup कैसे एक student को help कर रहा है from their phone devices, from their tablets, how with their phone they can get into development from the phone. आप पूरा process बताना from end to end. So initially we were trying to build an operating system that is flashable. Okay. So but that was creating a lot of friction. People don't want to ditch the OSs like Windows or Mac for a solution like this, because it's in very nascent stages. It doesn't have all the features, all the support. So what we did is that we built a website that looks, feels, and functions like an operating system. We have our own app library over there, so you can just go. You don't need to install anything. You just go there, you just click on that application, and you can just get started with that. As simple as that. So users will have their credits. They can so the more the amount of compute they consume, the more the that's consumed, the credits. So ऐसे काम करेगा basically. तो इस कारण आपने इसको नाम दिया Infinity OS because you can achieve infinite things with this
operating system online. So Absolutely. yeah, तो आप बताना what are the differences between this operating system versus like a virtual machine online? काफी companies cloud operating system provide करते हैं, but that is very expensive first of all. But what is something you are providing that those companies and virtual machines are not? First of all, as you said, virtual machines are extremely expensive. First things first, because they are constantly running. You need to like, schedule them, turn them on, off, do this, do that, and even to set up a virtual machine on the cloud accounts are not easy to set up. Be it AWS, GCP, other cloud providers, you need to have a credit card, which most of the students don't have. They need to do this, do that, and even if they start using that after a point of time, they have to start paying a huge amount. And for the normal end users, most of the people like don't even know what's a VM and how to set that up. What is cloud? What is EC2 instance? What is that? They don't know. So unke liye or asan, like to make that more easy, in Infinity OS, it's very simple. You just go log in. It will be like a normal OS. Uh, it's a browser, like it's a website, but it will just look like a operating system. We'll have our application library. So once you click on an application, there are applications running as microservices in the cloud already. So once you make a request, you will just open that, and you'll already have like suppose you already have an account, so you will have a name server under your name. You will have your app data cache, and they'll just fetch it. Within a couple of seconds, you will have that application in front of you, no matter in which device you are, no matter where you are logging in from. So that's the beauty of Infinity OS. Yeah, because it's really some OS on websites are very difficult to use from phones. तो फोन में अच्छा एक्सपीरियंस देना मिलना फोन में अच्छा एक्सपीरियंस मिलना इज वेरी हार्ड, क्योंकि टच स्क्रीन्स के लिए वो बने नहीं होते, एंड दैट इज एक्चुअली माइंड ब्लोइंग. नाउ लेट्स गेट टू नो हाउ यू स्टार्टेड विद अ विजन एंड मेड इट पॉसिबल. सो जब आपके पास एक आइडिया था, फ्रॉम आइडिया टू इम्प्लीमेंटेशन आप कैसे फॉरवर्ड लेके गए? दिस वाज अ रोलर कोस्टर जर्नी, टू बी ऑनेस्ट. सो जब मैं फर्स्ट ईयर में था, जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था, तो आई हैड दिस आइडिया. सो फर्स्ट टाइम घर से बाहर अकेले पंजाब में, फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू पंजाब इन एलपीयू यूनिवर्सिटी, आई वाज अलोन मेकिंग न्यू फ्रेंड्स. आई जस्ट तभी पेंडेमिक चल रहा था, तो हर दौर में एक ही लड़के को रख रहे थे वो लोग. तो आई वाज वेरी अलोन, जस्ट थिंकिंग. आई वाज अ पार्ट ऑफ एलपीयू's क्रिकेट टीम एज वेल. सो मैं सिर्फ खेलता था और फिर सोचता था बैठ के. तो इन द pandemic time, I did around more than 30 MOOC courses on cloud computing, artificial intelligence, UX designing. So I had the basic like very superficial knowledge about many of the fields. So I was just thinking and talking to people, making new friends, and एक चीज कॉमन था कि सब everybody was complaining about the laptops. ये नहीं चलता, वो नहीं चलता. तो आई जस्ट थॉट कि मैंने ये बचपन में देखा है, मेरे को थोड़ा बहुत आता था, तो वो गया तब आई वाज जस्ट लर्निंग व्हाट इज सैस, पैस, आईएएस, बेसिक एकदम. तो वहां से I just called up my very close childhood friend Ronit and told ki, bro, can we make a cloud-based OS like this? And he instantly connected with the idea that day, and we started building. So initially, as you know, we had no zero knowledge about business. So we like went on emailing VCs कि हमको लैपटॉप बनाना है, हम लोग ओएस बना देंगे, कोई बड़ी बात तो है नहीं. ऐसे. So we got a lot of rejections in the early. It's very like everybody we went like we were bashed like thoroughly. But I'm very very lucky to have a university like LPU who supported me from the day zero. Actually, their entrepreneurship culture over there is very very good. So they supported me. I told कि मेरे को क्लास नहीं करना, मेरे को बनाना है. I see the potential, मुझे को बनाना ही है. So they told me, okay, you just build it and just give your exams on time. I was like, okay, I'll do that. So तब से journey start हुआ. I started working full time. So एक और छोटा सा कहानी है how I was being able to do that. So in the pandemic time, उसके थोड़े पहले से ही, for my pocket money, I was working as a freelancer in the California market, mainly as a tech consultant making websites, UX consultancy. तो उससे I was earning some amount, I was saving it just for like ऐसे ही सेव कर रहा था, तो it worked out well. So I spent that money over the next 1.5 years to build and run Project X before getting any funding from the government. So then I started reaching out to people, senior people, ki we need
स्ट्रॉन्ग टीम टू बिल्ड। सी, मुझे कुछ आता है, आपको कुछ आता है, और एक बंदे को और कुछ आता है। सो द मोर डाइवर्सिटी वी हैव इन द टीम, द बेटर वी कैन बिल्ड द प्रोडक्ट। तो तभी इन द फर्स्ट ईयर ऑफ माई कॉलेज, वन लाइक इन्फिनिटी ओएस वर्जन, लाइक आइडिएशन स्टेज तक तो नाम भी ठीक नहीं हुआ था। तो आई वेंट टू आईआईटी बॉम्बे इन द फर्स्ट ईयर ऑफ माई कॉलेज एज अ अंडर ग्रेजुएट रिसर्चर। तो वहां पे आई लर्न अ लॉट वहां पे, और मैंने देखा कि कितना लोग आगे सोचते हैं कि हमको यहाँ पे रोका जाता है ना, ये मत करो। वहां पे जाके आई सॉ दैट, एंड देन मेरे को और ज्यादा कॉन्फिडेंस मिला। आई टॉक्ड about my idea with our, Professor Dr. Joshi, who is currently the HOD of IDC at IIT Bombay. He also liked the idea. तो तब से जाके वी स्टार्टेड, तब प्लान था कि लैपटॉप बनाएंगे, ऐसे लैपटॉप बेचेंगे, बट दैट्स अ वेरी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस, एंड वी नीड सम वैलिडेशन फ्रॉम द मार्केट बिफोर बिल्डिंग समथिंग लाइक दैट। एंड वो फ्रिक्शन भी ज्यादा था कि why would someone give up on a like generic solution? तो one fine morning I was thinking कि bro, this will not work out, क्या करे। तो I thought, why don't we just build it on the web? Anyways, it's running on the web, everything is on the servers, so why create that hardware, like why create that hardware friction anyways? Why not everything on the like web? फिर मैंने कॉल किया रोनित को, भाई ये करते ये ज्यादा आसान रहेगा। एंड ही वाज लाइक, हाँ ये भाई सही बात है। फिर हमने चालू किया, एंड दैट डिसीजन वर्कड आउट सो वेल। हमको फिर उसके बाद आईआईटी बॉम्बे से फंडिंग मिला अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। फिर हमको आईआईएम बैंगलोर के लॉन्च पैड प्रोग्राम में चांस मिला। वी वर द ओनली कंपनी फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया इन दैट कोहॉर्ट। सो उसके बाद हमको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से भी फंडिंग मिला एट आईआईटी पटना। फिर हमको जाके गूगल क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर रेट मिला $200,000 का। एंड इन द मीन वाइल, एज आई वाज सेइंग कि टीम इंपॉर्टेंट है। सो ये जो प्रॉब्लम है ना, हम लोग बोल रहे समझ रहे, बट कोई अच्छे से इसमें लाइक दैट, इफ यू जस्ट गो एंड सी इन गूगल, देयर इज नो concrete data regarding this problem. There is very scattered data. So the problem statement is not very defined. So I tried to connect with the industry professionals who have been working in the field. So I connected with Carlos. So Carlos is a distinguished engineer at NVIDIA working on Kubernetes. So he was in the team that built Kubernetes. Oh, so he collaborated So with you. हाँ, उन्होंने आपके साथ काम किया डेवलपमेंट में. been working with us for more than 6 months without any salary. Wow. So he instantly connected. So he was from South America, but he's right now in Germany. So he worked in the Silicon Valley. He instantly liked the idea. I just texted. We had couple of calls. Right now he's like part of our family. We have daily conversations, like puns and everything. So उसके बाद हमारा tech side में I, Ronit are young people. We know the direction. We have the vision. We need the guidance and the experience. So people like Carlos came in. Then we needed some help in the management part. I am Bangalore, तो हम चले गए कुछ 6 महीने में कितना सीखे, but we need the experience of decades, people who have done that. So we were very lucky enough that the senior director of HP India, who was the director of VMware for 14 years, wanted to join us full time without salary. Full time. He has been there for 4 months, full time without salary, working with us. His Wow. name is Gopal Srinivasan. So and again, एक और प्रॉब्लम, डिजाइन, अच्छा प्रोडक्ट डिजाइन। आई एम अ प्रोडक्ट डिजाइनर, बट आई एम 20 years old. I am learning. I am trying to do my best. I need some guidance again. So I went on LinkedIn. Another person, Gautam Vora, who built the Ola enterprise design himself. He led that part and worked with Ola's founders. He built the studio for BCG in India, the design studio. He led Accenture's design team. He is also full time with us for the last 6 months approximately. हाँ, अगस्त में ज्वाइन किया था उन्होंने। हाँ हाँ हाँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इससे भी पहले जब आइडिया स्टेज में था ना, वो समझने में two people have played a very pivotal role actually. Mr. Kiran Kadagoppa, who was the VP of Bank of America, is based out of Charlotte. तो उनसे भी बहुत अर्ली स्टेजेस में, he also connected with the problem. He helped me to connect with many people
and get there. So he's like, he and Mr. Viraj Pathi, who is the founder of Ramanuja 9C, he's also based out of Texas. So he's also a serial entrepreneur. So these people who have been there, done that for decades, also shown that conviction in me from day zero. That's why, like we are here about to launch Infinity OS. So I truly believe that, it's about the people, it's about connecting people. It's not about me, it's not about you, it's about everybody at once. It's about the problem. Brilliant. So can you share ki how were you able to get reply from these people? Because currently in the market many people struggle. मैं काफी स्टूडेंट से बात करता हूँ जो जॉब्स ढूंढ रहे हैं, उनको 100 लिंक्डइन मैसेजेस भेजने पे भी 5-6 रिप्लाईज भी नहीं आते. सो कैन यू टेल मी हाउ वर यू एबल टू टेक योर विजन फॉरवर्ड? तो मैंने जितना सुना है कि देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है विजन. योर स्टोरी इज मोर इंपॉर्टेंट देन हैविंग द बेस्ट इंजीनियर्स. तो दैट विजन बनाना, दैट स्टोरी बनाना कि एवरीवन कैन कनेक्ट विद, वो आपने कैसे बनाई एंड हाउ वर यू एबल टू रीच आउट टू सो मेनी पीपल एंड गेट रिप्लाईज फ्रॉम? LinkedIn is a very, 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 very good tool. Okay, LinkedIn say I unintentionally, subconsciously was very active on LinkedIn since my teenage years. So वो अकाउंट को थोड़ा सजाना अच्छे से, ठीक है, वो सजा के आई डिड 30 more courses as I said. I was a research, so I was researching at IIT Bombay. So these things actually, have small impact, like small things but big impact actually. So ये काम करता है कभी कभी, but again, one thing is that we need to be very concise, to the point. ज्यादा लंबा मैसेज कोई नहीं पढ़ता, मैं भी नहीं पढ़ता, आप भी नहीं पढ़ते होगे मुझे लगता है. तो we have to be very straightforward. This is what I can offer, this is what I want, this is what we are working on, can we work together, need your help, need your guidance. I never told Carlos ki, इतना आवर्स कमिट करना होगा, ये करना होगा, बट ही वाज जस्ट so much committed to the problem. He only bugs me at times, भाई ये करना होगा जल्दी जल्दी जल्दी. So this is the best thing. So we have to be very, very concise कि इतना ही बोलना है. Even like this, I connected with the head of disruptive tech of World Bank, IFC World Bank of South Asia. So I know her personally. उनके साथ बहुत अच्छे रिलेशन है. So I also, like, in the very early stages, I texted her on LinkedIn ki, just with the pitch deck ki, we are building something super crazy over here. Want to have a chat? She just replied back, yeah, sure. We can have a talk. So ek mahine baad we had a meeting. So she liked the idea, but World Bank invests after Series B. So she's like, would love to stay in touch. I met her at a couple of conferences also. So these connections help a lot. So आपको ज़्यादा, like, if you value people's time, people will value your time. So जितना कम मैसेज, जितने short में you can convey, that's the best way. एब्सोल्युटली. और एट द एंड ऑफ द डे जब भी हम मैसेज करते हैं हमारे गोल में होना चाहिए कि हमें वैल्यू ऐड करनी है एंड हाउ कैन दे ऐड वैल्यू टू अस. इट शुड बी इन बोथ हैंड इन हैंड. हमेशा माइंड में रहना कि आप कैसे वैल्यू ऐड कर रहे हो और वो आपको कैसे कर सकते हैं. अगर दोनों गोल्स मैच करते हैं देन कनेक्शन इज पॉसिबल. True, true. But एक ही जगह पे ना सोच के, it is more of a strategy कि this is the thing I want, कि this is with this particular skill or this particular thing I want. तो उस हिसाब से प्लान करके we can filter out searches on LinkedIn, connect. This is the conversion to chat to onboarding. एब्सोल्युटली. अब आपने अपनी जर्नी बताई विजन से लेकर डेवलपर्स तक पहुंचने की. नाउ कैन यू शेयर योर जर्नी कि इस विजन को आप फंडिंग के लिए इन्वेस्टर्स के पास कैसे लेके गए एंड हाउ वर यू एबल टू गेट इन्वेस्टर्स इनटू योर प्रोजेक्ट? Yeah. So, the first things first is that we need to have realistic vision. Even if the vision is very, very big, I have to have a very realistic plan of action कि इस फंड्स को कहाँ पे यूज करना है, कैसे यूज करना है, कितने टाइम के लिए यूज करना है. एंड इफ आई जस्ट गो एंड आस्क अराउंड $20 million to people, they will not give. Traction नहीं है, कुछ नहीं है, they will not give. So it's better to ask for a humble amount कि I'll sell it to 100 people. उन 100 people का experience से ही ना, those matrices are gold. Then people will reach out. So government of India का seed fund से we got rejected twice. After we pivoted to the cloud-based operating system, had those data ready, did some primary research, talked to users,
understood the real problem. We knew what the problem was, but उसको articulate करना is very important. Data के अलावा, like data के बगैर, like nobody will listen what you're talking to. Either you have to have a very nice revenue or very nice data to show you the gap that you're trying to fill. So once we had that data, then things became easy. So IIT Bombay से जो fund मिला Ministry of Electronics and IT के अंदर, I'm a MIT EIR fellow at IIT Bombay. So वहाँ पे भी they liked it. We had such a nice presentation and such a nice deck, and the interview was so nice. वो लोग graduation के पहले किसी को fund नहीं करते. They made a special consideration for us. I'm still in college. So वहां से जाके फिर एक चीज मिलने के बाद ना वो रिकरिंग होता चलता है. मतलब once someone shows conviction, वो other people does the same. करेक्ट. वो होता है ना कि आप किसी को ईमेल करो कि हाँ आई वांट योर फंडिंग, आप उससे नीचे लिख दो कि हाँ वी हैव ऑलरेडी बीन फंडेड बाय सो एंड सो, तो वो एक रिकर्शन इफेक्ट पड़ जाता है. Yeah, but again, having said that, the macro conditions of the market are not very good to raise funding at this point of time. So these grants, so Google का help was immense. I reached out to the startup team at Google by email. They connected me with someone. I shared the documents. जब उन्होंने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड कर चुका है, इतना अच्छा टीम है, तब जाकर उन्होंने प्रोसेस कर दिया. एक दिन के अंदर प्रोसेस कर दिया, एक दिन के अंदर. वाओ. So like I never thought कि इतना आसानी से हो जाएगा. अब बताना आपकी लॉन्ग टर्म विजन क्या है, बिकॉज दैट इज रियली इंपॉर्टेंट फंडिंग के लिए. अगर लॉन्ग टर्म विजन क्लियर ना हो, योर स्टोरी क्लियर ना हो, हाउ यू वांट टू गेट वीसीज रिटर्न, तो वो इम्पॉसिबल है ऐसी फंडिंग मिलना. सो कैन यू शेयर दैट? Absolutely. So vision long term में is to eradicate the hardware dependency altogether. But for now, अगले 2 साल में क्या करना है? That's very very concrete. अगले 5 साल का we can think, and everything is dynamic, everything is changing. So we need to know what we are doing tomorrow, the day after tomorrow. It's like very simple. So अभी क्या है कि एक ही vertical पकड़ रहे हैं हम, education market, कि clear gap है कि Indian like not only in India and everywhere in the world, if you look at the balance sheet of any university in India, any top university like IIT Bombay, IIT Kharagpur to any private university, the gap is कि इनका balance sheet में सबसे ज्यादा खर्चा है क्या? IT infrastructure, around 25% of the total expenditure, and that happens to be the expenditure with the highest depreciation rate of around 25%. So they can't keep up with the tech. So every student is unsatisfied. You just talk with people. I talk with people from IISc Bangalore, IIT Bombay, everybody, tier 2, tier 3 colleges in India, everybody is with the same problem. And वहां पे there is a clear gap. And वहां पे पैसा भी है. वहां पे they are spending. They're not getting the ROI. And there is no competition in that vertical. So we started off with that vertical. First reason is the gap. Second reason, personal reasons as students, to see other students happy. These people will become the next scientists. These students will become the next influencers, next astronauts. So, to empower them. They will be buying Infinity Wars for their companies when they become entrepreneurs. I'm quite sure about that. So, we should, so as it like, तो एक वर्टिकल से हमने स्टार्ट किया, तो जब हम वहां से अच्छा आरओआई दे रहे हैं, वो अगर हीरो सेक्शन बन गया हमारा, वहां देन वी स्टार्ट शिफ्टिंग वर्टिकल्स थोड़ी थोड़ी. तो यहाँ भी स्ट्रेटेजी है कि स्ट्रेटेजी क्या है कि with this education sector we can fix minor bugs, fix this that we can't afford to do in the enterprise sector, जहाँ पे $multi-billion डील चल रहा है, $multi-million काम चल रहा है. If some things happen, we can't actually compensate for that, even though it's very secure. Infinity Wars का encrypted है, but again we never know what's coming. So to just be sure, ऐसे हमने strategy किया. And then end users के लिए तो day 1 से हम लोग चालू कर देंगे बीटा, अप्रैल एंड से hopefully, while we are in the US, तब तक वो लाइव हो चुका होगा. तो you know तो ऐसे हमने प्लान किया कि पीपल D2C चालू कर देंगे विद एजुकेशन सेक्टर एज और B2B फ्रंट, एंड एंटरप्राइज वो अडॉप्शन लाइक ऑटोमेटिकली हो जाएगा. We believe in like building good products for the people, so they'll adapt it hopefully. Brilliant. तो अभी आपका विजन है पहले एजुकेशन सेक्टर का एक एक इंस्टीट्यूट का बच्चा पहले कंप्यूटर, उसके पास कंप्यूटर एक्सेस जाए थ्रू, एंड देन टू कस्टमर डायरेक्टली, जैसे हम जैसे लोग भी कर पाए. अभी सिर्फ इंस्टीट्यूशंस को. नहीं. So you can buy it also. Suppose you are a student, तो आपका
यूनिवर्सिटी में सपोज यूर इन योर फोर्थ सेमेस्टर, तो आपका 4 सॉफ्टवेयर लग रहा है, तो योर यूनिवर्सिटी इज पेइंग फॉर दोस 4 सॉफ्टवेयर्स, ओके। तो उसके ऊपर अगर आपको और कुछ करना है, एंड्रॉइड डेवलपमेंट करना है, वो है नहीं, यू कैन जस्ट टॉप इट अप विद सम क्रेडिट्स एंड गेट इट डन। ठीक है, सो वेरी गुड। D2C हम लोग ओपन कर देंगे स्टार्टिंग में, D2C विल बी ओपन फ्रॉम डे 1 ओनली, बट B2B पे जो फोकस वर्टिकल्स है वो धीरे धीरे हम लोग फोकस करेंगे टू मेक इट मोर रोबस्ट। गॉट इट। सो एंड आप B2C का भी है, एक स्टोरी मैंने मिस कर दिया, बहुत बड़ा स्टोरी है, सॉरी। सो I just saw this problem कि इंडिया में only 49% of the schools are having functional computers, and our primary research, so secondary data shows कि 70% of the college students in India are having problems with their current IT infrastructure. हमारे प्राइमरी रिसर्च में वो आया 73%, more or less same, so it's the similar. So I wrote it to one advisor of Prime Minister Modi, ऐसे लिख दिया, मतलब always call reach out person. So I just got a call one fine morning कि आप आ जाओ पार्लियामेंट में। मैं बोला क्या, कहाँ पे? कह रहे पार्लियामेंट में। तो तो मैं बोला मैं तो कोलकाता में हूँ, मैं कैसे आऊँ? यार ठीक है, आप दिल्ली आओ, फिर 2-3 दिन टाइम लेके आप कॉल कीजिए, हम बात करा देते हैं। तो मैं गया, तो मैं जाके उनसे मिला। So she was so kind enough to understand the problem. She acknowledged that there are budget constraints from the government side also. So they passed the NEP, National Education Policy. So they need to bring that in. So हम लोग हमारा पायलट करेंगे लबासना में, hopefully very soon. Labasna is the place where IAS officers are trained. उसके बाद अभी IIT बॉम्बे भी बीटा करना चाहता है। Many other places want to do the beta. So अभी देखते हैं कि कहाँ पे चांस, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, but it will be very fascinating. And government के साथ, if the pilots go well, then they will like to adopt it, you know, inside the government as well. तो आपने ऐसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैसेज कर दिया अबाउट हम द मेल कर प्रॉब्लम्स बस, और हाँ, आपको रिप्लाई भी आ गया? रिप्लाई कॉल आ गया। एक्चुअली क्या है कि वन थिंग टू लाइक रिमेम्बर कि हर वक्त ना, जब हम लोग मेल पे सिग्नेचर करते हैं, फोन नंबर डाल दिया करो। तो क्या होता है कि इफ दे आर वेरी वेरी सीनियर पीपल, दे डोंट हैव टाइम टू राइट यू बैक, दे विल जस्ट फॉरवर्ड द मेल टू द सेक्रेटरी और PA एंड दे विल कॉल एंड टेक इट फॉरवर्ड। ब्रिलियंट। क्या बात है यार। ये तो है, अभी भी इंडिया में कॉलिंग का कल्चर ज्यादा है ईमेल से, तो डेफिनेटली, क्योंकि हाँ, जितने भी सीनियर लोग हैं उन्हें अच्छा नहीं लगता बार बार ईमेल पे डालना, मैसेज करना, फिर वेट करना। कॉल बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है। हमारे इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कॉल आना बहुत बड़ी बात एजुकेशन मिनिस्टर नहीं थे वो, है। he was just secretary to the government of India, prime minister's advisors, one of हाँ the secretary to the GOI of India. So उन्होंने ही वो क्या, I can't disclose the identity first, so sorry, हाँ। you know। हाँ, तो ऐसे ही things got moving. ओह, तो उस कॉन्वर्सेशन से आपको क्या वैल्यू मिली? मतलब उस कॉन्वर्सेशन से उन्होंने आपकी प्रॉब्लम समझी और कैसे आपको वैल्यू बैक दी? They were very proud actually that we're building this in India for India. That was the best thing, and they right out of the bat they were like, हाँ आपको कहाँ पे बीट करना बोलिए, I'll connect you with this person, that person, that person, and we'll take it forward. आप सिर्फ जल्दी एक स्टेबल वर्जन बना लो, then we'll start working on it. Very supportive environment. Government has a very very supportive environment. I like ऐसा मेरा I had a very paranoid perception, but it turned out to be opposite. ब्रिलियंट। अब कैन यू प्लीज शेयर व्हाट आर द चैलेंजेस यू फेस्ड इन बिल्डिंग दिस प्रोजेक्ट? आपने अपनी पूरी स्टोरी विजन से लेकर फंडिंग से लेकर आगे फॉरवर्ड करने तक पूरी बता दी, बट व्हाट आर द चैलेंजेस इन बिल्डिंग इट? मुझे जैसे आपने स्टोरी बताया लगता है कि पहले मैसेज पे रिप्लाई आया गया और आपको बेस्ट इंजीनियर्स मिल गए। कहने को तो बहुत आसान लगता है, बट व्हाट वर द रियल चैलेंजेस यू फेस्ड? This was 1% of the 100% effort that I've put in actually. So I had to sacrifice a lot from day zero. As a student from a very, very humble background, spending so much money on a company is unreal. Actually, people uh, thought that ये तो भाई ऐसे ही कर रहा है मतलब. So I was very clear with what I want to build, with a very clear plan of action. I knew what I wanted. So वहां से जाके I knew कि I have to keep putting this effort here.
तो I kept on putting that effort in the same place until I heard back from someone or something. वैसे जाके it I had to rebuild the team many times. Not everyone left, but I had to rebuild the team. And वहां से जाके ना वो कल्चर आता है. अभी वी हैव अ कल्चर, टीम कल्चर, तो इट्स वेरी इजी फॉर अस कि ये कल्चर मैच है, टिक 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 टिक. नहीं नहीं नहीं. तो वो बनाने में बहुत वक्त लग गया. कि अभी हम लोग, लाइक मैंने सीखा कि पीपल हु think about the product, think about solving a problem, are the person who should be on board. We never know. We have to again, knock on 100 doors to find that person. That's the thing that we have to do. So hiring is the hardest part. So ये सबसे बड़ा चैलेंज था कि टीम बनाना पहले अच्छे. अभी तो आई कैन रिलैक्स फॉर अ वाइल, फॉर लाइक हाफ एन आवर, 1 आवर. पहले ये नहीं था कि आई वाज ऑलवेज हैविंग कि पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, क्या करे. सो बट अभी इट इज मच मोर स्टेबल. तो यही है कि यू हैव टू पुट इन एफर्ट्स. हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है. स्ट्रेटेजी करना है, वो करना है, बट हार्ड वर्क तो करना है. जी. सो वो था, डम्बलडोर ने बोला था ना कि देयर आर टू वेज हैरी, वन इज द राइट, one's the right way and one's the easy way. So we have to choose it for ourselves. एब्सोल्युटली. और मुझे लगता है कि यार वेस्ट बंगाल में इतना टैलेंट है जो हाईलाइटेड नहीं है. मैं खुद जादवपुर यूनिवर्सिटी, आईआईटी खड़गपुर गया हूँ, और इतना टैलेंट भरा पड़ा है वेस्ट बंगाल में. इतने लोग स्मार्ट है, इतने लोग हार्ड वर्किंग है कि मुझे उनके पास जाके गूज बम्स आते हैं. आप थोड़ा बताना कि क्यों, क्या रीजन है कि वो इतना हाईलाइट में नहीं आ पा रहे जितना आना चाहिए. पीपल इन वेस्ट बंगाल, वहां पे ना, मतलब टैलेंट यहाँ पे हर गली में है. ठीक है. एवरीबडी इज सो टैलेंटेड, सो इट हैज बिकम लाइक नॉर्मल थिंग. यार हाँ यार, अच्छा, नासा गया था, सही है, ओके, वो भी गया है, कोई बात नहीं. तो हाँ, इट्स लाइक दिस. सो हमारे बगल वाले शहर में आईआईटी कानपुर के आई थिंक डायरेक्टर रहते थे. मुझे 2 महीने पहले पता चला. हाँ, ठीक है. तो ऐसा ऐसे ऐसी बात है. बट वहाँ पे एक कल्चर है कि so the demographics of West Bengal is dominated by the middle class people. Since the colonial period, वहाँ पे वो नौकरी करने का कल्चर रह गया. People very seldom do business in West Bengal. Even the people are talented, they give up. So like on their dreams. So I was a state level cricketer myself. मैं first year of college तक मेरा ड्रीम था इंडिया के लिए खेलना है, तो मैं स्टेट लेवल खेला, यूनिवर्सिटी खेला. तो तब like I didn't get that backing. मैं बोलता हूँ, अगर मैं वेस्ट बंगाल में रहता ना, एंटरप्रेन्योरशिप करना इतना आसान नहीं होता. मैं एलपीयू में गया तो वहां पे वो सपोर्ट मिला, वो इकोसिस्टम मिला, तभी मैं जाके थोड़ा वो पुश मिल पाया. ये कल्चर का वो डिफरेंशिएशन है. पीपल आर टैलेंटेड, बट ये गैप है. मेरे गांव में मदनपुर में एक गर्ल, लाइक वन गर्ल वेंट टू द एज, लाइक अभी क्या था, कॉमनवेल्थ गेम्स. पता ही नहीं किसी को. इन द अंडर एज कैटेगरी, आई थिंक शी वाज इन द वर्ल्ड नंबर 2. वही, मीडिया भी इतना हाईलाइट नहीं करता जो टैलेंट. द प्रॉब्लम इज कि मीडिया यहाँ पे ना सिर्फ पॉलिटिक्स दिखाता. मतलब people are so, here the politics is an entertainment, to be honest. So people are more inclined to see कि इसने, इस नेता ने क्या बोला, उस नेता ने क्या बोला, सुबह इसको ये पीट दिया. तो यही देखते हैं लोग, यही चाय की टपरी पे बात करते हैं. बट अभी द कल्चर इज चेंजिंग. अभी आई हैव सीन पीपल फ्रॉम आवर जनरेशन हु, लाइक मेरे बहुत दोस्त आते हैं मेरे पास कि भाई मेरे को एक एडटेक कंपनी खोलना है. मैंने बोला क्या करना है. इज लाइक आई वांट टू ओपन अ ऑनलाइन स्कूल टू टीच esports. I was like, wow, that's awesome. So people are coming up with ideas doing this. So यही चेंज आ रहा है, आई बिलीव. एंड एज यू हैव सीन कि ये चेंज आएगा. वो कॉलोनियल टाइम से वो कल्चर का डिफरेंशिएशन, अभी पीपल आर ट्राइंग टू बी मोर लिबरल, नॉट लाइक हाफ. अभी हाफ भी नहीं हुआ, बट ये हो जाएगा, आई बिलीव. ये कल्चर का ये हो जाएगा. जरूर एक दिन. एंड आई एम श्योर कि यू विल बी इंस्पिरेशन टू सो मेनी स्टूडेंट्स इन वेस्ट बंगाल एज वेल. ये चेंज आएगा. वाओ. एब्सोल्युटली. व्हाट हैपेंड, एलपीयू में भी ये नहीं था. एलपीयू में भी जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए वो क्लासेस नहीं लगाने का, अभी इस सेमेस्टर से, लाइक दिस टर्म से अलग से क्लासेस लगते हैं बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप के. सर ने बोला कि आपके लिए हो पाया. आई वाज लाइक, ओह माय गॉड, ये क्या बोल रहे हो आप. क्या बात है. वाह यार. और कुछ फाइनल वर्ड्स आप कहना चाहोगे स्टूडेंट्स के लिए जो आपसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं? स्टूडेंट्स, डोंट स्टॉप.
No matter what happens, just don't stop. You know where to go. Find the why. 3 things, you should know why you are doing this. Then you will find out what and how. ठीक है? Why is the most important driving factor. Otherwise, we always lose our way. Be fickle minded. Just find the why and just get to it. It will be a roller coaster. Trust me, it will be worth it. That's it, guys. Awesome यार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. I'm immensely inspired by you, Ronak. Thank you so much for your time. I'm sure this video is gonna inspire many students to get into startup world. Absolutely, Hanu. Thank you so much for your time as well. Thank you for having me. It's a pleasure. I've been your fan for many years. I have been watching your videos for many, many, many years. Trust me. So it's a dream come true for me as well to see you. Pleasure. Thank you.